Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we shall continue our topic which we started yesterday. In yesterday's topic we discussed concept of caste system. And today we shall discuss characteristics of caste system. How caste system is unique in its nature and what have been its properties, attributes, characteristics like that. Now let us discuss characteristics of caste system. जो ये caste system है which we discussed yesterday, it's unique to India, it is unique to Indian society. It is originally, or it is only found in Indian society, the caste system. And there has been a lot of research on this social institution, that is institution of caste system. There has been a lot of research, and still sociologists are adding their ideas related to the caste system. And one famous Indian sociologist whose name is Dr. Javid has written some books on the caste and has researched a lot. He has done a first-hand observation by remaining with the castes of the Indian people, where he studied its characteristics, properties like that. The caste system is highly complex in nature. It's not as simple as we think. It is Dr. Javid, I said it, Dr. Javid is had been a famous Indian sociologist who describes the characteristics of caste in his books. In his books, he has written some books related to the caste and class. First, Caste and Class is a book in India. Caste and Class in India. He has written it in 1952 up to 1956. He also mentioned the caste system in books like Caste, Class, and Occupation, which he has written in 1961, and Caste and Race in India in 1970. So what has he described? Which characteristics he has mentioned in the books? First, caste as a hierarchical division of society. जो ये caste है, there has been division, it has created divisions in the society, and those divisions are hierarchical. That is, they are like a ladder, like where one step is below, then another step is higher than that, and just is like that case of caste. The Hindu society is divided into hierarchical groups, that is gradational groups, that is differential groups. The groups or castes are Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, and many more. There had been lot of subdivisions of these castes. Further, the Brahmanas are placed on top of the hierarchy. जो Brahmanas है they are on the top seat, and the Shudras are the untouchable, and the lower castes or the Harijanas are at the bottom of the hierarchy. तो यहाँ पे ये है कि Brahman deem themselves as superior, they mean themselves as superior, and then comes the Kshatriyas, then comes the Vaishyas, and the Shudras are the last, or the untouchables. Okay,
तो ये क्रिएट हुई है डिवीजन इन द कास्ट. एंड देन मेंबरशिप इज बाउंड ऑन बर्थ. नो वन कैन डिटरमाइन हिज कास्ट विथ हिज विश. मेंबरशिप कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ. जो इंसान की बर्थ किस कास्ट में हो जाती है वो उसी कास्ट से मुंसलिक है और वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता. इट इज डिफिकल्ट फॉर दिम. सो हिज मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन birth. Thirdly, restrictions on occupation. The caste has created some restrictions on occupation, on profession as well, because uniquely or originally the castes, different castes have some unique occupations to carry. Other castes cannot do the occupation of the other castes. So according to the rules of caste system, castes had their specific traditional occupation. Person had to adopt the occupation of his own caste. Even if the other occupations were more profitable, man had no choice except adopting his caste's occupation. अपनी कास्ट में कौन कौन से ऑक्यूपेशन आते हैं, वही ऑक्यूपेशन, वही प्रोफेशन, वही काम वो द मेंबर्स ऑफ दैट कास्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें. यानी अगर शूद्र चाहे कि मैं टीचर बन जाऊं, मैं प्रीस्ट बन जाऊं, ये नहीं हो सकता. ये प्रीस्ट, टीचर, डॉक्टर ये ब्राह्मण्स का काम है. सो द ऑक्यूपेशंस हैव बीन demarcated for some specific castes. For example, ब्राह्मण्स के जो यूनिक काम है वो नीच काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स के लिए काम है वो टीचर बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स बन सकते हैं, वो प्रीस्ट्स बन सकते हैं और ये काम दूसरे तबकों के या कास्ट्स के लोग नहीं कर सकते. वे ऐसी वैश्यास हैं, क्षत्रियास है, वो फौजी हैं यानी वॉरियर्स है, वो किंग्स बन सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सकते हैं और ये काम शूद्र नहीं कर सकता. ऐसी ही वैश्यास है, वो फार्मर्स बन सकते हैं, ट्रेडर्स बन सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं. और जो शूद्रास है, देयर इज नथिंग फॉर देम. दे कैन just do the labors. They are laborers for the higher castes. So there are menial and very pitiable jobs for them. Restrictions on food habits. जो ये caste system है ये restrict करता है कुछ food habits. जो caste है उनके food habits भी unique होते हैं, अलग होते हैं. The caste system has imposed certain restrictions on the food habits of the members. जो दलित्स है या शूद्रास है या अनटचेबल्स है वो बिल्कुल उनके लिए अलग खाना है और जो ब्राह्मण्स ऐसे उनके लिए अलग खाना है. रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज. जो कास्ट है ये रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैरिज भी डालता है. मिसाल के तौर पर कास्ट इज एन एंडोगैमस ग्रुप. जो कास्ट होती है ये एंडोगैमस ग्रुप होती है, यानी अपने कास्ट के लोग जो है वो अपनी कास्ट में ही शादी कर सकते हैं. ओके, यानी कभी कभी एक्सेप्शंस हो सकती हैं मगर अमूमन ये देखा गया है कि ब्राह्मण में ही शादी करता है. देयर आर hundreds of subcastes और वो subcastes जो they all castes are endogamous in itself. We have studied in marriage types of marriage where we study what is an endogamy. So I will repeat it. What is an endogamy? Endogamy is a rule of marriage. Endogamy is a rule of marriage according to which an individual has to marry within his group. अपने ग्रुप के लोग अपने ही ग्रुप उसमें शादी करते हैं. ग्रुप कैन बी रेस, कास्ट और लाइक दैट.
और जो ये कास्ट है दे ऑल आर इंडोगेमस, यानी हर कास्ट के लोग अपने कास्ट में ही शादी करते हैं। एक्सेप्शंस हैं मगर जनरल रूल यही है कि ऑल कास्ट्स आर इंडोगेमस, यानी वो अपने ही कास्ट में शादी करते हैं। Endogamy is important feature of CS. CS I have written short here. That is caste system. Endogamy is important feature of caste system में caste system एक खास feature है, that's endogamy, यानी अपने caste के लोग अपने ही जात में, अपने जात के लोग अपने जात में जात के लोग यानी अपने caste में ही शादी करते हैं। तो social restrictions भी है, जो ये है कास्ट सिस्टम, वहां पे सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। द कास्ट सिस्टम हैज आल्सो इम्पोज्ड सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट्स। दैट इज, मैं ऐसे आपको बोल दूं कि रिस्ट्रिक्शंस, सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि अगर कहीं से शूद्रा यानी अनटचेबल यानी हरिजन अगर उसका साया भी बड़ी जात वाले के लोग पे पड़े तो उसको बहुत मार पड़ सकती है या पड़ती है। यानी जो निचली सतह के लोग हैं यानी शूद्राज हैं, ऐसे लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, दे हैव बीन आउटक्लासड, दैट इज दे हैव बीन आउटकास्टेड, देयर इज नो सोशल इंटरेक्शन फॉर देम विद द people of higher castes. The caste system gives the idea of pollution. Pollution क्या है? It means a touch of a lower caste man untouchable would pollute a man of higher caste. यानी अगर निचली सतह के लोग, जात के लोगों ने ब्राह्मण जात या क्षत्रिय जात के लोगों से कुछ टच किया तो वो ही समझते हैं हम पल्यूट होते हैं। ऐसे पल्यूट यानी गंदे होते हैं, यानी नीचे वो समझते हैं निचले जात के लोग गंदे हैं, दे आर पोल्यूटेड, दे पोल्यूट अस व्हेन दे इंटरेक्ट विद अस, व्हेन दे कम नियर टू अस। सो इवन हिज शैडो इज कंसिडरेबल एनफ टू पोल्यूट अ हायर कास्ट। अगर उसका साया भी उसकी जैसे जो इंसान है हायर कास्ट का या पीपल है हायर कास्ट से, अगर उन पे निचली सतह के जात के लोगों का साया पड़े तो ये वो अच्छा नहीं समझते हैं। कौन? बड़ी जात के लोग। तो ये भी यूनिक था इसमें। अब हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, कास्ट सिस्टम एज ए हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यानी डिवीजन्स ऑफ सोसाइटी क्रिएट हुए हैं इससे। फिर हमने पढ़ा मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ इम्पॉर्टेंट है कास्ट में। जो इंसान जिस कास्ट में जन्म लिया है वो उसी में रहता है, वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं करता। यानी ये हरिजन या अनटचेबल ब्राह्मण ही बन सकता है, वो हरिजन ही रहता है सारी उम्र। रिस्ट्रिक्शन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी खास, यानी जैसे शूद्रा लोग उनके लिए बस यही, वो बंगी बन सकता है, वो सफाई वाला बन सकता है, वो छोटे काम कर सकता है, बड़े काम नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण लोग करते हैं उनके लिए बड़ी जॉब्स है, बड़े ओहदे हैं, बड़ा ठाठ बाट है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड हैबिट्स भी असरअंदाज होते हैं कास्ट सिस्टम से, यानी जो खास किस्म के ज़ात के लोग होंगे वो उनका कुछ खास ग़िज़ा होगी, फूड हैबिट्स डिफरेंट होंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज भी है कि मैरिज यह कास्ट इज एन इंडोगेमस ग्रुप कास्ट, ईच कास्ट इज सब डिवाइडेड इन सेवरल सब कास्ट्स, और सारी कास्ट आपस में इंडोगेमस है, यानी वो अपनी ही ज़ात में शादी करते हैं। सोशल रिस्ट्रिक्शंस जैसे हमने पढ़ा, तो ये था हमारा टॉपिक। इट वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आप इससे छोटा भी लिख सकते, वैसे मैंने बहुत शॉर्ट किया है ये आपके लिए। तो इंशाल्लाह कल हम कास्ट सिस्टम के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, नेचर ऑफ द कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे।
इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में होगा, कल होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।